Hello friends, my name is Tejal and today I am going to share some information of the types of queue. There are basically 4 types of queue: circular queue, priority queue, DEQ and multiple queues. Okay, we will start with the circular queue. Okay, why circular queue is needed? First of all, what is the problem? Wastage of memory in standard queue in DEQ operation. Okay, जो सिंपल क्यू होती है उसके अंदर वेस्टेज ऑफ मेमोरी बहुत ज्यादा होती है. उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज हमारे पास 5 एलिमेंट का एक क्यू है. ठीक है, उसके अंदर मैंने पांचों एलिमेंट इंसर्ट किए. ठीक है, और पांचों एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद मैंने 2 एलिमेंट को क्या कर दिया, डिलीट भी कर दिया. अभी 3 एलिमेंट बचे हैं और 2 स्पेस खाली पड़ी है जो मैंने डिलीट कर दी है ऑलरेडी. ठीक है, बट वो 2 मेमोरी स्पेस का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ बिकॉज दिस इज द वेरी सिंपल क्यू. ओके, सो वी फाइंड data structure has found some another technique that is called the circular queue. कि जो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है उसको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या फाइंड हुआ, सर्कुलर क्यू. तो व्हाट इज सर्कुलर क्यू? The arrangement of elements q of 0, q of 1 and up to q of n in a circular fashion with q1 following q of n is circular queue. The last node is connected to first node to make a circle. वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगी कि how last node is connected to the first node. Initially both front and rear pointers point to the beginning of the array. It is also known as a ring buffer. ओके, वो पूरा सर्कुलर क्यू को क्या बोलते हैं हम, रिंग बफर. ओके, दिस इज द सिंपल एग्जांपल हाउ टू मेक अ सर्कुलर क्यू. यू कैन सी ओवर हियर क्यू ऑफ 0. दैट मीन्स वी आर गिविंग सम इंडेक्सिंग. वी आर टेकिंग a variable as a queue 0 1 2 3 4 5 6 7. that means total digits are total elements are 8. Initially your front and rear which is situated at q of 0th position. Okay, some of the operations are happening on the circular queue are like inserting an element. Okay, how to insert element in a circular queue? This is the algorithm for inserting a data into the circular queue. Step 1, if front is equal to 0 and rear is equal to maximum -1, then it write as a overflow. Go step 4 and if. जैसे हमने सिंपल क्यू के अंदर किया कि सपोज हमारे डेटा एलिमेंट के डेटा से जो फिक्स एलिमेंट से उससे ज्यादा हो जाए तो वो क्या नोटिफिकेशन हमें देगा कि योर क्यू इज ओवरफ्लो. ओके, इन सेकेंड स्टेप if front equal rear is equal to -1 then set front rear is equal to 0. जो हम डी क्यू के अंदर सिंपल क्यू के अंदर कर रहे थे कि हमें इनिशियली हमारा फ्रंट और रियर दोनों -1 पोजीशन पे होता है, उसको हम कैसे सेट कर देंगे, सेट फ्रंट एंड रियर बोथ एज अ 0. else if rear is equal to max -1 and front which is not equal to 0, तो सेट क्या करेंगे, रियर एज अ 0, else set rear is equal to rear plus 1. if any element is coming, so our rear point will be incremented by 1. and in step number 3, set q of rear is equal to your value and exit from the circular queue. Okay, this is the simple insertion algorithm of the circular queue. You can see the example of circular queue with the some data. Suppose it started with the q of 0. Your front pointer will be situated at q of 0. Data are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. Okay, and q of 7 which is equal to your rear pointer. Okay, अभी मैं 45 ऐड कराने जाऊंगी तो वो मुझे क्या कह देगा कि your q is overflow. Okay, this is the overflow condition. Okay, suppose if your f is equal to r is equal to -1, then आप स्टार्ट करो f is equal to r is equal to 0 से. बरोबर, दोनों अभी -1 पोजीशन पे है
और आपको डेटा फिल करना है तो दोनों को आप कौन सी पोजीशन पे लाओ, 0 पोजीशन पे। देन आफ्टर आप क्या करो, चेक करो कि इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और डेटा फिलअप करते जाओ और इंक्रीमेंट करते जाओ किसका, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 का, ठीक है। एंड दिस इज द ऑपरेशन ऑन सर्कुलर क्यू, दिस इज द डिलीशन एल्गोरिथम कि how to delete an element from the circular queue. Step 1, if front is equal to -1, then write circular queue is underflow. Go to step number 4, that means exit. Or step number, if this condition is false, then go into the step number 2, set value is equal to queue of front. Step 3 is equal to, if front is equal to rear, then set front rear is equal to -1, or front is equal to max minus 1, set front is equal to 0, else set front is equal to front plus 1, and if यहाँ पे एंड इफ दो बार क्यों आया, क्योंकि हमने दो बार एल्स कंडीशंस लिया है, इसलिए एल्स के अंदर एल्स लिया है, तो सबसे पहले हम एंड ऑफ इफ करेंगे, उसके बाद में दूसरी एंड करेंगे और एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज दी अंडरफ्लो कंडीशन। सपोज सारे एलिमेंट्स क्यू के हमने सर्कुलर क्यू के डिलीट कर दिए हैं और हम और भी उसको बोलेंगे कि डिलीट सम एलिमेंट, तो हमें क्या बोल देगा कि योर क्यू इज एम्प्टी, दैट मीन्स अंडरफ्लो कंडीशन। और सपोज यू वांट टू इंसर्ट एनी एलिमेंट, तो यू कैन डायरेक्टली इफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0, देन एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू -1। जो -1 है कंडीशन से, उससे हम क्या लाएंगे, 0th पोजिशन पे लाएंगे और डेटा फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। होप you are enjoying my session. Thank you very much. Thank you.